Thank you so much for joining us. It's a pleasure to have you here today. Okay, सबसे पहला सवाल, your name is such a heavy name, like it's Prashasti Singh. It feels like कोई professor, कोई dean होगा. So when did you realize that you would want to be a stand-up comedian instead, and you have this funny bone in you? Yeah, actually, when you put it like that, तो मुझे ऐसा लगता है कि because of my name being so heavy, I've always taken myself seriously. अच्छा. I actually never this, but yeah, my mother is a professor of Hindi, and hence my name. So that explains. And yeah, I think I think somewhere the seriousness is built, in the way people look at you as a girl also, you're just a more serious person. But I know that by the time I was in college, I would make my friends laugh a lot. But I really never thought of comedy as a profession. So I really thought that there is something in me that people find funny. But I think I can do it professionally. That epiphany came to me much later. Like I did my MBA, I was already in a job, I was doing marketing. I started doing some theater and improv on the side, which is where I was like, you know what, I meet a lot of people who do open mics. Why not try it? And then one thing led to another. Stand-up comedy, when we talk about it's a very male-dominated, profession. लड़कियां इतनी funny होती नहीं है, वो तो हर चीज अपने दिल पे ले लेती है. It's kind of a general norm. How did you break the stereotype, or did you have any challenges in the beginning when you started? I think दो चीज. I think when I started, तो तब तो I was so naive in the sense कि I had a job. I was doing open mics for as a hobby. तो मैंने कभी इतना दिमाग लगाया नहीं कि लड़कियां करती है नहीं करती. It was just one of the things that came into my life. But definitely, when I was starting off, the good thing was at that time a lot of ladies open mics had started happening just to break this culture that there's so many women feel so shy, which is true. Like I don't think women are unfunny or they don't have the potential to be funny, but I think culturally we just are more, we don't like to put ourselves out there so much. Okay, we are more skeptical of how we are perceived. So that was 1 year or 2 years in Mumbai specifically. A lot of ladies open mics came up with this idea that women are more comfortable in front of women and a lineup of women, and maybe if we put it together, people will come out more and do more stand up, and that really helped me. That gave me a lot of confidence. And now that I've spent years in it, and now that I've heard this so many times, I feel that of course audience का थोड़ा सा bias तो है अभी भी के Hmm. like yeah, whatever. But I think the more I think about it, the more I look at my people in my family also, I feel कि औरतें बहुत फनी होती हैं. हमें लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा ना हो तो हम डील ना कर पाए. ओके, लाइक ऐसे वी हैव सो मेनी पेन्स बिल्ट इनसाइड आवर बॉडी. ओके, समवन आई सीन माय फ्रेंड्स गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड आई एम लाइक, व्हाट, यू कैन नॉट गो थ्रू इट without having a sense of humor. Okay, the amount of stress you have to take. So definitely women have a great sense of humor. Women are just not used to putting it out there. Okay, we just it's not cultural for women to make people laugh. Okay, अगर date पे भी जाते हैं तो the boy is supposed to be funny, girl is supposed to be the one who laughs a lot. So that is the cultural change we have to see over time. That is the perception. But I'm very glad that more and more people are like breaking this norm and coming into comedy, because ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोग और inspire भी होंगे. That is true. I'm sure that you are a pioneer. You're a role model to many who have started thinking small town में बैठे बैठे कि कैसे हम भी अपने audience को जो है वो हंसा सकते हैं, and probably take this up as a profession. Now, talking about your show, it is called Man of the House. It goes without saying that we should bring our men along ताकि उनको समझ में आए कि क्या नहीं करना है. Is it? Yeah, that's also true. The show has multiple elements to it, but the main premise or the main root of the show comes from the fact that we are a family of three now. Okay, me, my mother, and my brother. And my father used to be there. He passed away 12 years back. And he used to be there. There's a default understanding he's man of the house. Now, in his absence, we've not been able to figure out who's man of the house. Okay, or sabko so a lot of chaos comes out of that. Okay, we're a family which is not fully conservative, not fully liberal, which is true for most of us in India or outside India right now. कि हम कहीं ना थोड़ा कंफ्यूज से हैं, हम पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और हम पीछे पीछे वाली भी चीजें ठीक से पकड़ के नहीं रख पाए. So in that weird set of ideologies, philosophies, अगर आप घर में 3 लोग हैं, यहाँ पे फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स भी उतने ही हैं, लेकिन आपको एक तरीके से आप सोसाइटी में भी सिखाए रहना. So what all it leads to, the chaos it leads to, that is basically the show.
So that is what Man of the House is all about. Okay, if I may ask, what are the three toxic traits of being a man of the house? मतलब ये है तो definitely ये तो करेगा ही करेगा और करेगी. ये बता दूंगी तो शो कौन देखने आएगा? Okay, now, there is one thing that I was reading about you, that you are also a writer. Now you've written a movie as well. But stand-up comedy शुरू होने से पहले ही सबसे पहले aspect आता है writing का. So which is the most difficult part in your entire process? Is it writing? Is it testing your new jokes with your friends and how they are going to receive it? Or is it the final performance? I think initially जब शुरू किया था तो writing used to feel the toughest because नए ideas को कैसे एक तरीके से आप साथ में बिठाओ, आपका क्राफ्ट बहुत रॉ होता है, आपको बस इंट्यूशन पे काम करना होता है. तो तब मुझे राइटिंग टफ लगता था, लेकिन तब मुझे शो पे जाके परफॉर्म करने में बहुत इनहिबिशंस थे, ओ शिट बॉम्ब नहीं होना चाहिए. I think over a period of time, definitely you understand कि in stand-up comedy, bombing and like jokes not working is part of the game. That is how you build it. And the performance part also you understand कि once you understand कि जो audience actually आपको देखने आया है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके अगेंस्ट नहीं है. एक बार वो फंडामेंटली आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाए ना, तो ऑलरेडी आपका काम बहुत आसान हो जाता है. सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस और टेस्टिंग ऑफ जोक्स से डर खत्म हो गया, इवन दो दे आर स्टिल टफ पार्ट्स. बट जो राइटिंग का एक होता है ना कि राइटिंग में अपने क्राफ्ट इंप्रूव हो गया है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है. एट द सेम टाइम एक जो डिसिप्लिन होता है ना कि बैठो और कुछ क्रिएटिव चीज, कुछ अच्छा आइडिया आने का वेट करो, या फिर कुछ ऐसा लिखो जो अच्छा लगे, दैट इज स्टिल अ वेरी ग्रूलिंग प्रोसेस. एंड यू हैव टू रियली बी वेरी डिसिप्लिन. इतना डिस्ट्रैक्शन होता है. आई रियली समटाइम मिस माय जॉब फॉर दिस. कम से कम एक बॉस था, तो उसके चलते यू वुड मीट डेड. राइटिंग आप पूरे फैल सकते हो. सो आई स्टिल फील राइटिंग इज द टफेस्ट फॉर डिफरेंट रीजन. अर्लियर लिखना आता नहीं था, अब आ गया है, लेकिन अब just to have the discipline and patience to sit with it is the tougher part. I think as an artist, that is how you grow also. Like the better you get, the more you are invested in the first aspect of it. Since we're talking about writing and bombing and stuff, आप हमें बताइए कि आपका कोई एक ऐसा joke which you thought was okay but killed with the audience, and a joke which you thought was fabulous लेकिन ऐसा bomb हुआ that you never tried it again. अच्छे वाले तो याद रहते हैं, बुरे वाले तो आप अपनी मेमोरी से पूरा से इरेज कर देते हैं ना. आई रिमेम्बर जो मैंने धूलखड़ी शर्माइक लास्ट ईयर जो मैंने वीडियोस किए थे, उसमें डेफिनेटली there were a couple of, I remember I was going on stage and saying I did not put much thought to it. I just said, मतलब कि फ्रेंड सर्कल में एक कपल तो है जिसकी बारात में डांस करते टाइम लग गया था कि गलत हो रहा है, तो बहुत नरक होना. Oh my god, that is so true. I did not write it. Okay, I was came to an open mic. I was thinking about this because I was meeting some friends. And I said it, and it really, that joke has always killed because that is so true. I'm guessing. This is the moment where we can probably take some inspiration and inspiring, anecdotes from you, because there are new people who are trying this out and it can be very discouraging. तो क्या करना चाहिए ऐसे situation में? How do you bring yourself back? I think I'll just repeat what a lot of people say about the arts, right? इसमें कोई बहुत नया नहीं बोल रही, पर मैं stand-up के context में बोलूंगी कि the best way to do it is कि जब आप लिखो तो आप पूरे उसमें घुस हो, पर जब आप परफॉर्म करो तो फुल डिटैच होके करो. द सेंस कि you are not your jokes. When you are putting your writing material together, be very honest, be fully you, be fully into it, be fully, use your heart. But know that when you're taking it in front of an audience, what the verdict on the joke is not a verdict on you, right? आप और आपकी जो लिखाई है वो दो अलग अलग चीजें. Of course you will feel bad. Okay, like if you have a child and someone gives a feedback on a child कि आपका जो बच्चा है बहुत शैतानी करता है, of course you will feel bad. But you will not depressed because of it ना. आप अपने बच्चे को फिर बताओ कि भाई ये नहीं करना है. I think अपने जोक के साथ भी ना वही एटीट्यूड रखना चाहिए कि भाई ओ ये भी परफेक्ट नहीं है, मैं इसको वापस ले जाती हूँ, ठीक करती हूँ. So I'm thinking that attitude that, oh, this is very personal to me, I love this, but this is not me, really helps you, improve with every failure. Like, failure actually becomes the thing that really helps you the most in building something. So yeah, I think a great metaphor is treat it as your child who is not perfect, who is small and needs a lot of growth. And a lot of people will tell you कि इसको ये सिखाओ वो सिखाओ, तो सिखाओ, पर आप बच्चे को लेके आप डिप्रेस नहीं होते, वैसे ही आपको जोक्स लेके डिप्रेस नहीं होना. That is how I.
Okay, any quirky superstition or quirky ritual that you follow before you head on to the stage? क्वर्की मतलब एक चीज तो ये है कि आई थिंक दिस इज समथिंग ऑल लॉट ऑफ अस डू वी हैव फिगर्ड आउट कि हमारे पेट में कितना खाना होना चाहिए लाइक यू नो कितना कम या कितना ज्यादा टू डू इट वेरी रॉन्गली ओके हमें ये लोग ना कई बार शो के पहले कोल्ड कॉफी पी के खड़े हुए हैं और फिर अजीब सा लग रहा है कि एंग्जाइटी से पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है तो आई थिंक फिगर आउट कि मतलब मुझे पता है कि मैं शो के 3 घंटे पहले से कुछ खा नहीं सकती आई नीड टू बी यू नो एम्प्टी स्टमक एंड आई टू शो के 1 घंटे पहले मुझे शो के बारे में सोचना बंद कर देना होता है. So what I try to do is I really try to look at the audience, okay, see, wow, I'm a part of them. But जितना मैं अपने दिमाग में कम रहूं, जितना मैं कार्बन में रहूं, that really helps. बट नहीं कि कुछ इसके अलावा कुछ क्वर्की तो मैं क्या बोलूं मतलब मैं सोची सुपरस्टिशियस होने से भगवान को याद जरूर करती हूँ लाइक यू नो like I look at stage as a temple and I'm very like you know this is a place of worship okay ये Right. comedy का मंदिर है यहाँ पे हम घंटी बजाने आए हैं तो I really go in with और वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी गॉड्स ऑल्सो क्योंकि ना आप कितना भी रिहर्स कर लो कितना भी आप ऑडियंस को पूरा हॉल भर दो वो उस दिन एक मैजिक तो होता ही है एक अमेजिंग शो के लिए ना कहीं एक एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होता है जो कभी होता है कभी नहीं होता तो उसके लिए हमेशा हम लोग कॉमेडी गॉड्स नाउ यू टेक केयर ऑफ इट बट टॉकिंग अबाउट योर शो, इंडिया के 4 शहरों में कर रही हैं आप, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर एंड दुबई. यार सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि दुबई इंडिया में नहीं है how how is this happening? और आई थिंक द थिंग इज कि लेट्स फेस इट ओके कि आई थिंक जब मैं चेन्नई या बैंगलोर भी जाती हूँ तब भी मेरे लिए मुझे पता है कि एक सबसेट ऑफ द ऑडियंस ही है जो आता है राइट सो आई थिंक व्हेन आई पुट इट ऑन द पोस्टर मेरे दिमाग में कि हर शहर में हर कोई मुझे वैसे भी नहीं देखता राइट इन एवरी सिटी इन इंडिया आल्सो आई थिंक एक्सेप्ट ओनली द नॉर्दर्न सिटीज जहाँ पे ना सब लोग हिंदी बोलते हैं पर Hmm. वहां पे इट बिकम द कि आप यू नो जो लोग वर्किंग क्लास जो लोग आईटी में काम करते हैं लेकर काम करते हैं वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं मुझे स्टूडेंट्स के को उतना समझ में सबका पॉइंट इज कि हर सिटी में सबसेट ही तो है जो मुझे देखने आता है so when I go to for me doing a show in Chennai and doing a show in Dubai is not very different to be honest because there is उतना ही ट्रैवल one करना है आपको. ट्रैवल में भी एक ही घंटे का फर्क है आई डोंट नो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपको पता नहीं कि मैं कहा, मुझे पता है बट इट्स लाइक एवरी टाइम दुबई आल्सो ना मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता है दुबई वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एवर आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम आई वेंट विद द अदर अ फ्यू अदर कॉमेडियंस सेकंड टाइम मुझे अकेले ट्रैवल करना था मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरा पहला अकेले का इंटरनेशनल ट्रिप है बट अगेन यू नो वंस यू एक्चुअली लुक अराउंड यू लाइक अरे सब लोग तो हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं सब लोग यू नो एवरी सेकंड पर्सन इफ नॉट स्पीक्स अंडरस्टैंड्स हिंदी और उर्दू कल्चरली भी उन्होंने इतना सिटी सो फ्रेंडली टू पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड that you never feel lost okay so I really in the past few a couple of years मैंने दुबई की इतने ट्रिप मार लिए कि अब मुझे सही में लगता है कि इंडिया का चौथा शहर इनफैक्ट आई टेल यू, हम लोगों को अगर कभी पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं माफी ताल ये सब बोलने के लिए. वो बोलते हैं अरे तुम क्या करता है, वो सामने से आपसे हिंदी में बात कर रहे होते हैं, यू आर ट्राइंग टू स्पीक अरेबिक. सो आई कंप्लीटली गेट इट. सो इसके पहले कभी आपका दुबई आना हुआ, और इज इट ओनली फॉर द शोज दैट यू हैव कम? एक्चुअली मोस्टली फॉर द शो दिस इज द फर्स्ट टाइम कमिंग फॉर माय सोलो शो तो मैंने पहली बार हिम्मत करके सोलो शो डाला है क्योंकि हम एक नया शो प्रिपेयर भी किया है इसके पहले मैं एक्चुअली 3-4 बार आई हूँ और मोस्टली एक बार एक्सपो के टाइम पे हमारा शो था बहुत बड़ा शो था उसके लिए आए थे अगेन देयर वर 5 of us at that time then there were 2 times I've come for other lineup shows so again always come in these groups and we've always seen a huge audience but again they've never been solo shows तो वही सिर्फ घूमने के लिए अभी तक एक्चुअली हमेशा एक दिन आती हूँ तो एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाती हूँ खाना खाने के लिए शॉपिंग करने के लिए Okay, thank you so much. It was a fun chat with you. Prashasti, wish you all the very best for your show. One quick message for all the listeners of ours. क्या कहना चाहेंगे उनको, आपके शो के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज डू दैट नाउ. Please, if you have time, please come. I hope to see you there. Show is very funny, very enjoyable. You can totally come with your family. It's a very family friendly show. It's a very clean show. So please come, please enjoy. I hope to have a good time with all of you. Thank you so much. It was a pleasure to have you. Thank you, Shruti. Thank you so much. Bye Bye. bye.